अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सबाहत एंड हियर आई एम लाइव विद माय लाइव सेशन. सो सबसे पहले तो लेट मी सी हु इज़ लाइव विद मी ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स सो आई कैन जस्ट स्टार्ट विद द सेशन. सो एक्चुअली ये सेशन होना था कल, बट ड्यू टू instability in the net and the overall services I couldn't come live. और आज भी मैंने जो है रिस्क ही ले लिया. अगर जो है इन बिटवीन कहीं गड़बड़ हो जाए तो डू अंडरस्टैंड कि नेट इश्यूज़ है और मैं कुछ भी डिलिबरेटली नहीं कर रही. जिस तरीके से बाकी सारे जो है सर्वाइव कर रहे हैं उसी तरीके से मैं भी सर्वाइव करने की कोशिश कर रही हूँ. एंड वाओ, दैट्स ग्रेट टू सी कि भाई आई कैन ऑलरेडी सी समवन हु इज़ वॉचिंग. वैसे तो काफ़ी लोग वॉच कर रहे होंगे, बट अनलेस एंड अनटिल. ओके, रजब अहमद अवान, थैंक्स so much for your compliment. And let me just go on different platforms and just see if I'm live over there. And do tell me आज के टॉपिक के बारे में what do you think. जो भी जहाँ कहीं से भी देख रहा है, चाहे आप पाकिस्तान से हैं चाहे आप अब्रॉड से हैं, do let me know. और आप लोगों के जो गिले होते हैं, आई डोंट स्पीक इन उर्दू. वेल, आई डू स्पीक इन उर्दू एंड मोस्टली माई सेशंस दे आर अ मिक्स ऑफ उर्दू एंड इंग्लिश. जो सी लैंग्वेज मुझे ज़्यादा अच्छे तरीके से आती है, आई ट्राई टू स्पीक दैट लैंग्वेज. और देन जहाँ तक टेक्स्ट की बात है, येस आई कैन नॉट टेक्स्ट इन उर्दू बिकॉज आई डोंट नो दैट रोमन इंग्लिश उर्दू वाइल टेक्सटिंग. सो मेरे लिए ज़्यादा ईजी है इफ़ आई write the messages in English. It's easy for me to communicate. Okay, so let me see if I can just catch myself. Yes, I can see myself. It's over here, right over here. Okay, and Usman, I can see you at the top of my screen. So बड़ी बात है, आज के दिन जो है आपको कोई काम नहीं है and you just came live over here. Okay, Fakhri Alam, I hope you're fine. You were not feeling well a couple of days ago. आपने बताया था मुझे. So I hope everything is fine at your end. Okay, चलें. So now I can see myself live and I'll be able to answer to your comments क्योंकि वो दूसरी स्क्रीन पे मुझे नज़र आ रही हैं. Okay, so I have like every day I have many new followers and many new people who see me live over here. And you know what, actually though I'm humbled and I'm thankful to everyone who joins my live sessions and who comes here and interacts with me, cause I like to interact this way rather than के 101 basis पे मैं जो हूँ लोगों के साथ interact करूँ. Well, 101 it's a bit different cause when I'm doing my work, the professional work, so उसमें मुझे 101 करना पड़ता है. But live sessions में I can interact with a lot of people. So I like this way much more cause इसमें जो है काफ़ी लोगों के मसाइल हल हो जाते हैं. And I don't have I don't think anyone has that kind of time कि भाई आप 24 hours में हर एक को individually entertain कर सकें in the sense कि उनके जो है problems को आप हल कर सकें. Okay, thank you so much for all those emojis. I can see those emojis. And okay, Kazi Nadeem Ashraf, वालेकुम अस्सलाम. Yes, I know you are from Nigeria. और मेरा ख्याल है अब तक सब लोगों को पता चल गया होगा आप नाइजीरिया से हैं. Kadri Ehsan, thank you so much for joining. And okay, if you are still at the top of my screen, well, आज सर थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं. पता तो है मुझे नेट इतना कुछ स्टेबल नहीं है. सो लेट मी जस्ट टेक यू पीपल लाइव बिफोर स्टार्टिंग माई सेशन. सो आज का जो सेशन है, फैसल रज़ा राना. ओके, एक ही दफ़ा राना लिखे ना, फैसल रज़ा. ओ नो, आपने एक ही दफ़ा राना लिखा है, फैसल रज़ा राना. ओके, ठीक, माई बैड. ओके, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग. और आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट टेकिंग यू लाइव वन बाय वन. और जिसने आना है लाइव, यू हैव टू एक्सेप्ट when I invite you, and if you don't accept and if you want to decline, it's totally up to you. कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है. मैंने अपने सेशंस में कभी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की. सो आप लोग खुशी खुशी आते हैं और मैं खुशी खुशी आपको पढ़ाती हूँ या टिप्स ऑफ़र करती हूँ. ओके, अबाउट लाइफ, अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, अबाउट एसेंसेस ऑफ लाइफ. ओके वैसे, ओके, हाँ, यस, हाँ. ओके, लेट मी सी कौन है जिसको मैं सबसे पहले लाइव पे इनवाइट कर सकती हूँ. खान जी, मुझे आप भी नज़र आ गए हैं. ओके, लेट्स सी. ओके, दिस इज़ वन पर्सन, कादिर एहसान. ओके, आई एम इनवाइटिंग यू लाइव. मेरा टॉपिक है अबाउट what do you think about? But then, also you can
say which motivation is better. Okay, Qadir Ehsan. So when I'm inviting you live, I try not to talk myself for the simple reason कि आवाज कोरस में चली जाती है. Okay, this is Qadir Ehsan. Simply, I guess आपका जो है नेट ड्रॉप हो गया होगा. No issues. Let's see. Uh, let's see who else. There's someone else. Let me see अगर मैं इनको लाइव ले सकती हूँ. I don't know ये कौन है. मुझे डीपी से तो नहीं नजर आ रहा. ओके यस इस फैसल रजा राना अब नजर आ गया. फैसल साहब अगर आपने लाइव आना है तो आप आ जाएं. ओके इट्स डिक्लाइन. अच्छा जी देखें अगर आपने डिक्लाइन करना है नो इश्यूज. सो हाउ अबाउट दिस आई जस्ट स्टार्ट विद माय सेशन और इन द एंड मे बी अगर आप लोगों का झाका खुल गया और आपको थोड़ी कम शर्म आनी शुरू हो जाए तो देन आई कैन टेक यू लाइव. सो इन द मीन टाइम आई जस्ट स्टार्ट विद माय सेशन. आज का जो सेशन है एज आई टोल्ड यू इट्स अबाउट मोटिवेशन एंड आई वांट टू टॉक अबाउट मोटिवेशन. सो बिफोर माय टॉकिंग अबाउट मोटिवेशन आई वांट टू नो हाउ डू यू इंटरप्रेट मोटिवेशन. आपको क्या लगता है व्हाट इज मोटिवेशन. क्या वो कौन सी चीजें हैं जो कि आपको लगता है हो तो आप मोटिवेट होंगे. सो डू लेट मी नो. डू शेयर योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स. कमेंट बॉक्स इज ओपन. उस पर मैंने कोई रिजर्वेशन नहीं लगाई हुई कि ये बोल सकता है ये नहीं बोल सकता या ये नहीं बोल सकती. तो इट्स इक्वालिटी फॉर एवरीवन. जिसने जो बोलना है कमेंट बॉक्स इज ओपन. यू आर फ्री टू यूज योर थॉट्स and your processes, mind processes, yeah, whatever thinking is coming and it's at the top of your mind, you can let me know in your comments. But ये है कि मेहरबानी करके थोड़ा डिसेंट रखिएगा. अदरवाइज फिर अगर इनडिसेंट कमेंट्स हो तो आपको पता है ना फिर उनको फिल्टर आउट करना पड़ता है. बट देन ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी पीपल टू फिल्टर दैट आउट. अगर मैं कुछ ना भी खाऊं तो बहुत से लोग होंगे यहाँ पर आपको कंडेम करने के लिए whoever uses indecent comments. ओके सो सबसे पहले तो जो हम स्टार्ट करते हैं कि जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है ना दैट ड्राइव्स लास्टिंग सक्सेस. So when I talk about intrinsic, what is meant by intrinsic? Intrinsic is that kind of motivation जो आपके अंदर से निकलती है. क्योंकि इस दुनिया में जो है ना हर तरह के लोग होते हैं. ऐसे लोग होते हैं who want to have motivation, like लोग उनकी तारीफ करें तो वो मोटिवेटेड होंगे कि ओके जी फलाने ने मेरी तारीफ की तो भाई ये बहुत अच्छी चीज हो गई है एंड आई मोटिवेटेड कि लोगों ने मेरी तारीफ की है. बट देन देयर आर अदर पीपल जो कि जो मोटिवेशन है वो ड्राइव करते हैं इंटरनली. वो खुद ऐसी चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं कि उनको खुद ब खुद जो है मोटिवेशन आती है. और जो अंदर से जो मोटिवेशन आपको आ रही होती है दैट इज द मोटिवेशन that is going to bring you much more success. और लाइक आपने अक्सर जो है देखा भी होगा और ऑब्जर्व भी किया होगा कि लाइक आजकल जो है लेट्स गेट इनटू द रियलिटी वर्ल्ड. ठीक है इंस्टेड ऑफ कि मैं जो हूँ आपको कोई चीज जो है खीर बनाकर पेश करूँ आई टॉक डायरेक्टली. ठीक है अब वो हो सकता है बहुत से लोगों को अच्छा लगे और हो सकता है बहुत से लोगों को बुरा लगे. तो आप ये देखें कि भाई अगर आप जो है आपका एक गोल है क्योंकि हर इंसान को पता होता है उसका क्या गोल है और उसने वो गोल किस तरह अचीव करना है. सो आप फर्ज करें कि भाई यू वांट टू लूज वेट और उस वेट को लूज करने के लिए इट गेट बहुत प्लान्स हैं, बहुत डाइट्स हैं, बहुत एक्सरसाइजेज हैं. बहुत लोग हैं जो कि कहते हैं जी मैं फिटनेस इंस्ट्रक्टर हूँ या मैं ये कर सकती हूँ, मेरे पास ये प्लान है, मेरे पास वो प्लान है, तो आप जो है ये डाइट इस्तेमाल करें, आप वो डाइट इस्तेमाल करें. बट द थिंग इज जब तक आप इंटरनली खुद को मोटिवेट नहीं करेंगे या मोटिवेटेड नहीं होंगे तो आप जितने डाइट प्लान जो है देख लें या उन पर अमल करने की कोशिश करें तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा. बट यस जिस दिन आपने अपने आप को इंटरनली मोटिवेट कर लिया और आपके जहन में ये चीज आ गई कि भाई विदाउट लूजिंग वेट आई वोंट बी एबल टू अचीव this goal, yeah, I won't be able to wear my favorite dress, yeah, I won't be able to look nice on the wedding of my children, या मे बी जो है किसी की आपकी क्लोज फैमिली में किसी की वेडिंग है, मे बी आपके जहन में ये आई वोंट लुक नाइस अगर मैं वेट नहीं लूज करती क्योंकि देन मुझे कोई ड्रेस नहीं आएगा और जो ड्रेस आएगा उसमें मैं जो हूँ so I won't go into those details and the same applies to men as well.
लाइक जब तक जो है वो इंटरनली मोटिवेटेड नहीं होते एंड दे डोंट फील कि भाई ओके देयर समथिंग रॉन्ग विद अस एंड वी नीड टू चेंज दैट, तब तक जो है कोई एक्सटर्नल फोर्स उनको मोटिवेट नहीं कर सकती। मैं जितना भी आप लोगों को मोटिवेशनल बातें करूं या जितने भी मैं आप लोगों को टिप्स दूं, अनलेस एंड अंटिल यू फील कि यस मैं जो बात कह रही हूँ दैट इज हेल्पिंग यू एंड इट्स एडिंग वैल्यू टू योर लाइफ, और इंटरनली यू आर फीलिंग ओके देयर इज अ डिफरेंस, आपकी लाइफ जो चेंज हो रही है एंड यू आर फीलिंग दैट डिफरेंस, only then would my talks work. Otherwise I'll be just another person who comes on Facebook or who comes on YouTube and does live sessions and just goes. So I'll be another person in the queue unless and until आप लोग internally motivated नहीं होते। तो मोटिवेशन के लिए जो सबसे बड़ा फैक्टर है दैट इज यू नीड टू हैव इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यू नीड टू हैव दैट मोटिवेशन जो आपको इंटरनली ड्राइव कर रही हो। दिस इज द नंबर वन थिंग। अच्छा, देन इसमें एक और जो चीज होती है, यू नो योर गोल्स, आपको पता है कि भाई यानी इट कैन बी एनी गोल। अगर हम जो है किसी स्टूडेंट को, जैसा मैंने आपको फिटनेस का बताया, देन अगेन जैसे हम स्टूडेंट्स को देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो होते हैं उन्होंने किसी एग्जाम के लिए पढ़ना है एंड दे हैव लाइक स्कूल में देयर वुड बी सो मेनी काउंसलर्स और मेंटोर्स होंगे जो उनको गाइड कर रहे होंगे, स्टडी इंस्ट्रक्टर्स होंगे, एकेडमिशियंस होंगे, कोऑर्डिनेटर्स होंगे जो आपको बता रहे होंगे कि भाई ये आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, आपने इसको इस तरह पढ़ना है, ये करना है, ये करना है। तो उनकी सारी टिप्स अपनी जगह, दे डू हेल्प, आई एम नॉट सेइंग दे डोंट हेल्प, बट देन यू नो आपका क्या गोल है। अगर आपका गोल ये है यू वांट टू एंटर नर्स या यू वांट टू गो अब्रॉड एंड स्टडी फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट अब्रॉड, बिकॉज देयर आर सर्टेन सब्जेक्ट्स जो हमारे मुल्क में they take a long time to do a degree in that subject, but then अगर आप वही सब्जेक्ट जो है किसी बाहर की कंट्री से करते हैं तो then you don't have to go through that struggle of 3-4 years and then do that degree. हर डिग्री की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सर्टेन डिग्रीज रिक्वायर रिसर्च एंड देन देयर आर अदर डिग्रीज व्हिच डू नॉट रिक्वायर रिसर्च, बट इट ऑल डिपेंड्स कि एट द एंड आपने क्या परस्यू करना है या आपका क्या गोल है। तो व्हेन this thing is clear in your mind, your goal is clear, and you know, okay, this is my strategy, and this is how I'm going to go about. So then difference nazar aata hai, and then that makes a difference, rather than कि भाई आपको कोऑर्डिनेटर्स कह रहे हैं कि भाई ये टाइम टेबल है, ये स्केड्यूल है, इतना आपने दिन में पढ़ना है या ये पढ़ना है, आपने इस तरीके से मैनेज करना है, तो आप नहीं कर पाएंगे unless and until you have this internal motivation and internally you are prepared for it and you're ready, so okay, I have to move ahead with life. So this is the number second thing. Okay, Divan, I can see one of you who is from Bangladesh. Let me see आपका नाम क्या था? I think it was Divan Farooq something. Farooq Divan. Okay, thank you so much for joining and thank you so much for your compliment. मैं साथ के साथ आपके जो है ना compliments और जो comments है वो भी लूंगी and then I'll move forward. Farooq Diwan, I'm a Pakistani. I am from Pakistan and I'm not an Indian. So I'm a Paki Pakistani, born and bred in Pakistan. Okay. And I guess you are a Bengali Muslim. Okay, Bushra, thank you so much for joining. And let me see, किसी ने मुझे जो है कोई comment लिखा है. Let me just, oops. Okay, so it was rotated. Let's see. I'm sorry अगर मैं आप लोगों के comments miss out कर दूं, उसके reason ये है कि I am live and I have to put my eyes down in order to see कि भाई किसने क्या comment लिखा हुआ है. But then what I can do is I can go on the other side and then उसमें मैं जो हूँ check कर सकती हूँ. Qadir Ihsan, you're saying including people to perform to their best ability for achievement of organization is called motivation. Yes, you're very right. This is what motivation is, especially when you're working in an organization and as a team lead, you need to motivate other people a lot. खासतौर पे जो आपके team members होते हैं. खान जी आप कह रहे हैं मैडम नेटवर्क इज वेरी वीक, व्हाट इज द प्रॉब्लम, ओनली माय नेट इज वीक एंड ऑल. नहीं नहीं खान जी, सबका नेटवर्क वीक है, बस हम जो है ना चूल्हे पे लगे हुए हैं, चल जाए तो चल जाए, नहीं चला तो बस फिर ओके.
ओके देन फरूक दीवान आप कह रहे हैं आई ड्रीम वन डे आई विल गो टू पाकिस्तान श्योर इंशाल्लाह यू मस्ट कम टू पाकिस्तान एंड व्हेन यू आर इन पाकिस्तान डू लेट मी नो because you'll be traveling from such a far away place, so we should meet when you're in Pakistan. Okay then, okay, okay, you're Bengali Muslim. Okay, thank you so much for letting me know that as well. And uh, you should not remember past and start working. Yes, that is, you should remember past and you should learn from your past. क्योंकि आपका जो past है वो आपका present बनाता है और वही जो present है वो आपका future बनाता है. So if you have made mistakes in your past, don't repeat those mistakes, but rather learn from those mistakes. तो ये भी आपको बहुत ज्यादा motivated रखता है. But then instead of sticking to the past and not letting go of it, that is going to create a lot of problems. The परसों जो मैंने session किया था, that was about how you can let go of your past. So all that was about letting go of your past. But now when you're in the present, you should acknowledge the present and you should applaud whatever is going on around you. और किस तरीके से आप अपने आप को मोटिवेट कर सकती हैं. Because you know what, there are many things which are beyond your control. आप नहीं कुछ कर सकते, वो आपके कंट्रोल में नहीं है. But what you can do is you can learn to live with those things and you can learn to build a better future for yourself and for your generations as well. Okay, so this is about आपके questions के answers हैं. Mohammad Yasin Lakhani, thank you so much for joining and watching. And now let me see if there's any comment which is left. Nadir Sayyad, thank you so much for joining and watching. अच्छा, देन उसके बाद जो है एक और चीज जो मोटिवेशन में आती है, मोटिवेशन बिल्ड सेल्फ रेजिलियंस. तो मोटिवेशन how does it build self resilience? Like whenever you are searching for validations आप में resilience नहीं build करेगी. Resilience आप में आपके अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपकी अपनी जो मोटिवेशन है, आपका अपना बार बार अपने आप को कहना कि yes you can do it, it's going to build resilience. Farooq Diwan, Pakistani brother and sister, take my love. Okay, thank you so much for your compliments and thank you so much for your loves. मेरा ख्याल है everyone over here, they are watching you and they're seeing your compliments as well. So thank you and our humble thoughts are extended towards you as well. Okay, Khan ji, okay, it's okay. आप जा सकते हैं, आपका नेट अगर स्लो है, no issues. Okay, so then like if we talk about building resilience, like आप ये देखिए कि how is that, like अगर हम डेली लाइफ में देखें कि जब हम छोटे होते हैं और हम बाइसिकल चलाना शुरू करते हैं तो व्हाट हैपेंस इज हम कई दफा बाइसिकल से गिरते हैं. अब उस बाइसिकल में जब जितनी दफा हम गिरेंगे, हो सकता है कि कोई हमें उठाने वाला हो सकता है कोई हमें मोटिवेट करने वाला हो सकता है किसी की तरफ हम वैलिडेशन का इंतजार कर रहे हो, चाहे वो माँ है, बाप है या सिबलिंग्स है, ओल्डर सिबलिंग्स है. बट देन यानी these factors do play an important role, but unless and until you yourself have this motivation, okay, I have fallen, क्या हो गया, मैं दोबारा करूंगा, मैं दोबारा करूंगी. हो सकता है मैं एक दफा गिरूं, मैं दो दफा गिरूं, बट तीसरी दफा तो मैं चलाना सीख ही जाऊंगी ना. So when you have this driving force within yourself and you don't give up, and this is what life is about, you don't give up. आपको जिंदगी में बहुत सारे मसाइल आते हैं. जिंदगी तो नाम ही नशीब फराज का है, कभी आपकी जिंदगी अच्छी है, कभी बुरी है, कभी बहुत बुरी है. तो व्हाट डज दैट मीन कि आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, आप हाथ पांव छोड़ देंगे कि हाँ भाई अब तो कुछ भी मेरे बस में नहीं है, अब तो जो है ये हमारे लिए जो है बुरा हो गया है. एंड यू विल स्टार्ट कंडेमिंग people around you and your surroundings and your situation. No, you are not going to do that, क्योंकि ये वो टाइम होगा जब आपके जो अंदर के जो है subconscious है, it's going to pull you out of that misery. Because unless and until you yourself are that driving force, you don't need validation of people. You don't need people to say कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. Yes, there are at times when you feel nice कि people जो है आपके काम की तारीफ करते हैं, and that is in that scenario. Actually मुझे बात याद आ गई, तो मैंने कहा it's better कि मैं ना उसे explain कर लूँ. See, when people are complimenting on your appearances, there are many people who like this.
बट देन देयर आर मेनी पीपल हु लाइक दिस थिंग कि भाई उनके काम को कॉम्प्लीमेंट किया जाए. नाउ इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि मैं तो हमेशा अपने ही एग्जाम्पल्स देती हूँ और अपने ही लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करती हूँ. बिकॉज इधर जो है मैं ही आपके साथ कन्वर्स कर रही होती हूँ या आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर कर रहे हैं. तो इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई लाइक पीपल टू कॉम्प्लीमेंट ऑन माई वर्क और वट एवर आई एम डूइंग. उससे उनकी लाइफ क्या इंप्रूव हो रही है, इज इट इम्पैक्टिंग देम इन द पॉजिटिव वे, या जो मैं चाह रही हूँ कि भाई जो मेरे सेशंस हैं दे आर एबल टू ईज पीपल्स लाइफ इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. तो अगर उनसे इन सेशन से उनको हेल्प आउट मिल रहे हैं एंड इफ दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग मी रिगार्डिंग दीज सेशंस, कि उनकी लाइफ में किस सेशन ने किस किस तरीके से हेल्प किया, या दे आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड इन द पॉजिटिव डायरेक्शन और मोटिवेट हो रहे हैं. सो दिस इज माई मकसद. And if I am successful in that maqsad and people are complimenting me for this, then thank you so much. But then अगर मुझे लोग इस चीज पे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि जी मेरी आंखें बहुत अच्छी हैं, तो मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, तो जी आंखें तो आप लोगों की भी बहुत अच्छी होंगी और हो सकता है बाल आप लोगों के भी अच्छे हों, डीपीज में तो आप लोग को ये बड़े अच्छे लगे होते हैं, हर चीज ही अच्छी लगी होती है. तो यू नो दिस इज appearance, and जो appearance होती है ना that fades away with time. What does not fade is your strength of character, and it's that strength of character जिस पे आपकी जो है ना आजमाइश होनी है. And there are many other things जिस पे आजमाइश हो सकती है. तो if you are preparing yourself for the after after world, तो फिर उसमें आपने अपने सारे किबले दुरुस्त रखने हैं. तो quote unquote बहुत ज्यादा जो है I won't say anything very open, for the simple reason you all are very educated people and you all have a lot of knowledge as compared to me. So I can just share or give you advices regarding that pieces of knowledge जो कि मेरे पास है, and then you people have so much to share और आप जो है knowledge देते हैं. अदनान मलिक, वालेकुम अस्सलाम, may I know about your business which you are doing? हाँ जी, हम तो मोटिवेशन की बात कर रहे हैं. ओके भाई, व्हाट इज माय बिजनेस? एक्चुअली आई एम एन एजुकेशनिस्ट and I'm a digital marketer. So I work on providing creative solutions to people. और digital marketing में भी जो है social media platforms, ये जितने social media platforms हैं, that's my strong area. So I'm basically a creative person. तो जहाँ पर मैं creativity अपनी जो explore कर सकती हूँ, I explore that creativity. और जहाँ तक सेशंस की बात है, that's part of being an educationist. So when you are in this habit of giving people advices and teaching them, so you do these things. So if अगर मैं इसको broader perspective में देखूँ तो I'm much more of an entrepreneur. But then हर एक को जो है I have to answer them according to them. Then I can't say certain something in a broader perspective. पर अक्सर लोग मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो आई जस्ट टेल देम कि भाई दिस इज व्हाट आई डू. ओके जी, आप क्या कह रहे हैं काजी नदीम अशरफ? यू हैव सच अ सोसाइटी हु कैन एनकरेज यू. यस, इट्स वेरी रेयर, यू डोंट हैव एवरीवन इन दैट सोसाइटी जो आपको एनकरेज करते हैं. रादर आपके सोसाइटी में देयर आर मेनी पीपल जो आपको डिस्करेज करते हैं. कॉज जब भी कोई जो है, दिस इज रियलिटी, दिस इज नॉट समथिंग शुगर कोटेड जो मैं बयान करूंगी. जब भी कोई देखता है कि भाई कोई खातून जो है कोई अच्छा काम करने की कोशिश करी है, तो सबसे पहले लोग क्रिटिसाइज करते हैं. एंड देन बहुत से ऐसे लोग आते हैं हु आर मोर इंटरेस्टेड इन डूइंग फ्रेंडशिप्स विद यू. दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन पार्टनरिंग अप विद यू रिगार्डिंग बिजनेस पर्पसेज, और दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि भाई वो जो है like if they have a company, if they have an organization, तो वो आपकी सर्विसेज लें from professional point of view. So अक्सर जो लोग हैं they try to drag you down unless and until you draw your boundaries. So as a woman, if I'm on social platforms, I'm here to do my services in the professional way and not into chatting, not into messaging, don't like these things, and it takes too much time. Like I do text to people जिनके पास कोई important चीज होती है पूछने के लिए, या जिनकी कोई query होती है, या जिनको जो है already जो है life में बहुत confusions होती हैं and they want to resolve those confusions. So I do answer them back जहाँ भी मैं उनको किसी किस्म की facilitation कर सकती हूँ, I do that. अच्छा जी, काजी नदीम आप क्या कह रहे हैं? One can tell his own experience to other mean share. Yes, definitely.
when people exchange ideas, when people share with each another, only then उनको पता चलता है कि ओके लाइफ में ये चीजें हैं. लाइक इफ अ पर्सन इज सो you know depressed and confused, so when you listen to other people's stories, और जब आप उनकी जो है थॉट प्रोसेसेस को सुनते हैं, यू कम टू नो सो मच. फिर आपको अपनी पेन ही नजर आती है, आपको अपनी ट्रबल्स ही नजर आती. आप फिर उस पे जो है अल्लाह का शुक्र अदा करते हो कि भाई आपकी जो ट्रबल्स है इट्स नथिंग, यू कैन गेट ओवर दोज ट्रबल्स. So the same is with motivation. When you can, think positive, when you can drive and look for the force within yourself, you won't be needing people's validation. So bicycle अगर आप चलाना चाहते हैं, you might fall 2 to 3 times. You don't need people's validation. But yes, अगर आप में खुद वो motivation है कि yes, if everyone can drive the bicycle, so can I. You don't need other people's validation. You need to have that encouragement and that motivation within yourself. अच्छा जी, अदनान मलिक, थैंक यू. ओके, थैंक यू टू यू टू. मालदीव मतलानी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वाचिंग. ओके, देन जो है सेल्फ मोटिवेशन में एक और जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है, दैट इज यू नीड टू बी कंसिस्टेंट इन योर हैबिट्स. व्हाटएवर यू आर डूइंग, यू हैव टू क्रिएट कंसिस्टेंसी, क्योंकि अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी आपके हैबिट्स में, तो यू वोंट बी एबल टू गो अ स्टेप फर्दर. आप जो भी करना चाह रहे हैं उसमें जो कंसिस्टेंसी चाहिए. अगर आप जब व्लॉगिंग करते हैं, यू हैव टू बी डूइंग व्लॉगिंग एवरी डे. अगर आप मोटिवेशनल कोट शेयर करते हैं, यू हैव टू राइट डाउन दोस कोट्स एंड दे हैव टू बी मीनिंगफुल. किसी का कोट उठा कर लगा दे या पोस्ट पर कुछ भी लगा दे, whatever you are posting, it has to be meaningful. उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए. जब लोग उसको पढ़े तो उनको भी वो एसेंस जो है वो ड्राइव कर सकें. जिस तरीके से आप कुछ लिख रहे हैं, जब आप लिखते हैं, लाइक इफ वी टॉक अबाउट राइटर्स, इफ वी टॉक अबाउट बायोग्राफर्स, वो अपने जो रूह है वो निकाल के उन पेजेस में लिखते हैं जिनको हम पढ़ते हैं. एंड यस, अब तो वो सिनेरियो है कि लोग पढ़ने की जहमत ही नहीं करते. चैट जीपीटी खोला, उससे जो है सब कुछ लिखवाया, सब कुछ कर लिया. एंड इट्स नॉट जस्ट चैट जीपीटी, देयर आर सो मेनी अदर सॉफ्टवेयर. कोई बुक राइटिंग का सॉफ्टवेयर है, कोई ई बुक का सॉफ्टवेयर है, कोई किसी चीज का सॉफ्टवेयर है. तो लाइफ बहुत इजी हो गई है. बट देन अगर लाइफ इजी हो गई है, तो स्टिल यू आर नॉट गोइंग टू लीव योर हैबिट ऑफ रीडिंग अ बुक. क्योंकि बुक रीडिंग से जितना आप गेन करते हैं, सिमिलरली उतना ही आप गेन करते हैं जब आप लोगों के साथ बैठते हैं. बुक में आप ये चीज देखें कि बुक में वो कुछ होता है जो कि शायद एक इंसान की 50 साल की जिंदगी का असासा हो. एंड फॉर गेटिंग दैट नॉलेज, you might have to spend 50 to 60 years sitting around those people in order to have that experience. तो वो जो बुक की अपनी वैल्यू है, और वो जो हमेशा से कहते हैं a book is a best company of a person. तो never underestimate the value of book. तो आपको थोड़ा टाइम मिलता है, आप जो है यू आर स्लो रीडर, जस्ट कीप अ बुक और उसको जो है थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते जाए. So that's the best way you can go through books. And now it's so easy, there's so many softwares. आप ऑडियो बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं. यू कैन इवन हैव दो सॉफ्टवेयर जिनमें आप ऑडियो रीडिंग कर सकते हैं. सो आपको अपनी आंखों को ज्यादा जहमत देने की जरूरत नहीं है इफ यू हैव सर्टेन आई डिजीज और सम अदर प्रॉब्लम्स. ओके, काजी नदीम अशरफ आप कह रहे हैं लव ऑफ अल्लाह encourages you to be positive and motivate everyone. Yes, that is true. When you have when you undoubtedly love your creator, तो वो जो लव फॉर क्रिएटर है ना, वो ऑटोमेटिकली आपके दिल में जो है ना और बहुत सी मोहब्बतें डाल देता है. तो बट आई don't use the word love very openly cause इसको there are many connotations और लोग अपने अपने तरीके से interpret करते हैं, and then it's very difficult to explain everyone to what do I mean by love and what is love. Well, love is basically taking care, अगर human context में हम बात करें. अच्छा, शाहिद हबीब, वालेकुम अस्सलाम. शाहिद हबीब, thank you so much for joining and watching. And काजी नदीम आप कह रहे हैं to stay constant, some have to keep check on you, like children have to check from parents and teachers. Yes, that is also part of life. Like you have to establish your roles. If you are a parent, you have to keep check on your children. और आजकल की जो हमारी Gen Z है उस पे तो खास तौर पे नजर रखने की जरूरत है. But then if you are a responsible person, you don't have to keep a check.
क्योंकि देन यू नो कि भाई आपने जो ट्रेनिंग की है इट्स गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे। बट देन ऑब्वियसली एज पेरेंट्स के अपने बहुत से जो है इनसिक्योरिटीज होती हैं और बहुत से ग्रीवियंसेस होते हैं जो एट टाइम्स वो बच्चों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं, विच इज नॉट गुड, because there's a time when you have to let go of the child so that child is in the position to move forward in the world। अगर आप बच्चे को रोक कर रखेंगे या बहुत ज्यादा चेक रखेंगे और बहुत ज्यादा सख्ती करेंगे तो वो भी काम खराब करती है। तो always have a friendly attitude with your children, or let them speak whatever they want to speak, and don't look for logic when they are speaking, because not every child is able to express their thoughts in logic। there are different ways of expressing thoughts। कोई पोइट्री के थ्रू एक्सप्रेस करता है, कोई पेंटिंग के थ्रू करता है, कोई जो है अशारों के थ्रू करता है, कोई जो है लड़ के करता है। सो देयर आर सो मेनी वेज। एज अ एडल्ट, एज अ मैच्योर एडल्ट एंड एज अ पेरेंट, you need to give this space to your children and to other children as well। अच्छा जी, काजी मानसोदी, thank you so much for joining and watching this session। and काजी नदीम अशरफ, आप कह रहे हैं okay, yes, I have read that comment of yours। अच्छा, now moving forward, you know what, um, जो आपके लो मोमेंट्स होते हैं ना, दे हेल्प यू पुश थ्रू। क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में लो मोमेंट्स नहीं आएंगे ना और हमेशा हाई 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 मोमेंट्स ही होंगे, तो यू विल नेवर नो कि भाई लाइफ में लो क्या होता है। एंड देन देयर आर पीपल जो कि हु हैव हैड वेरी सक्सेसफुल लाइव्स, बट देन एकदम एक टर्न हुआ एंड दे बिकेम वेरी लो। बट देन इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। इंस्टेड ऑफ being demotivated, try to elevate yourself from that demotivation। जो आपके लोज हैं उसमें से निकलने की कोशिश करें, क्योंकि सक्सेसफुल वही होता है जो अपने लोज को फाइट करता है, उसको चैलेंज के तौर पे निकलता है और फिर उसमें से निकलता है। इस सिनेरियो में आपकी जो ड्राइविंग फोर्स हो सकती है ना, other than motivation, that is try looking at people who were in the same situation जिसमें आप हैं, and then you'll understand, and then you can always go and meet those people and ask them, because वो time होता है जिसमें they are able to give you the real essence of life। और वही वो चीज होती है जो आपको उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उस टाइम में हो सकता है you might be needing a friend who has a ear for listening to you, but then at the same time you might be in need of a friend जो आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे लेकर चल सकता है, या फिर चल सकती है, या फिर यह है कि आपको किसी किस्म के जो है टिप या एसेंस प्रोवाइड कर सकती है या कर सकता है विद पर्सपेक्टिव फ्रॉम देयर ओन लाइफ एक्सपीरियंसेस। ओके, सो दिस इज अनदर थिंग। Abdul Salam, thank you so much for your compliment and thank you so much for joining this session। अच्छा, देन इसमें एक और जो चीज आ जाती है, दैट इज कि यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर ओन हैप्पीनेस। आपकी हैप्पीनेस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। इफ यू आर नॉट हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, तो अपेरेंटली कुछ भी हो जाए, आपके सामने सोना भी आ जाए, तो यू वॉन्ट बी हैप्पी। तो आपकी जो हैप्पीनेस है उसका दारोमदार आपकी अपनी पर्सनैलिटी पे है, आपके अपने जज्बात पे है, आपके अंदर की फीलिंग से है। तो व्हेन आप ये देखें, इन रियलिटी आप देखें कि देयर आर सम डेज व्हेन यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी, और वो जो आपकी हैप्पीनेस है, यू माइट नॉट एट देयर आर टाइम्स जब आपको उस हैप्पीनेस की कॉज नहीं पता होगी, पर उससे जो आपके चेहरे पे ग्लो होगी और आपके ओवरऑल जो एटमोसफेयर होगा और ओवरऑल आपकी जो माइंडसेट होगा और जिस तरीके से आप जो है खासतौर पे जो आप ग्लो करे होंगे, वो सबको नजर आएगा कि देयर इज समथिंग डिफरेंट अबाउट यू। तो वो जो ग्लो है, ट्राई टू रीच आउट टू दैट ग्लो ऑफ योर्स, और उसके लिए अपने आप को अपने अंदर घुस के जो है अपने आप को एग्जामिन करने की कोशिश करें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। डू थिंग्स जो आपको हैप्पी करते हैं। रिफ्रेन फ्रॉम टॉक्सिक पीपल जो आपको जो है एक वरीसम कंडीशन में डालते हैं। कीप अवे फ्रॉम नेगेटिव एनर्जीज एंड नेगेटिव पीपल। इवन प्रोग्राम्स, आजकल जो प्रोग्राम्स है, इवन देयर इज सो मच कंटेंट आउट देयर, चाहे वो इंटरनेट पे है, चाहे वो लॉग्स में है, चाहे वो जो है यूट्यूब पे है, चाहे वो वेबसाइट्स पे है। सो यू एज ए इंडिविजुअल, you as an adult, and even if you are a child or a teenage, you can always seek guidance कि भाई कौन सा। एंड yes, if you are a teenage, आप उस
यू नो उस टाइम पे हो अपने एज में, व्हेन आपको इतना शऊर है कि भाई क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, बट देन if you have a good bonding with your parents, yeah, even your older siblings, so you can always seek their guidance, and you can always go out to them and ask for some kind of help जिसमें वो आपको गाइड कर सके। अभी क्या होता है, पेरेंट्स और बच्चों में जो है वो बॉन्डिंग नहीं है। पेरेंट्स थिंक कि भाई हम पेरेंट्स हैं तो हमने जो है वी हैव टू कीप एट अ डिस्टेंस, बट दैट डज नॉट हैपन। हमारे टाइम दे वर टोटली डिफरेंट, but अब जो time है, this is the time of the digital world, and if you want your younger lot and the Gen Z to be safe from this digital world, so you need to build a bonding with your children, और वो किसी भी एज ब्रैकेट के हों। यानी मैं कहूँ कि सिर्फ टीनेज बच्चों के साथ आपकी बॉन्डिंग होनी चाहिए, नो, आपकी बॉन्डिंग आपके जो है छोटे बच्चों के साथ भी होनी चाहिए, आपके टीनेज बच्चों के साथ भी होनी चाहिए, आपके एडल्ट बच्चों के साथ भी होनी चाहिए, आपकी बॉन्डिंग आपके मैरिड बच्चों के साथ भी होनी चाहिए। कॉज जो सबसे ज्यादा जो है इश्यूज आते हैं वो एडल्ट्स और मैरिजेबल एज एंड इवन आफ्टर मैरिज आते हैं। तो व्हेन यू आर फ्रेंड विद योर चिल्ड्रन, तो ऑटोमेटिकली वो जो बंदिशें हैं, वो जो खराबियां पैदा होती हैं, या बच्चे किस तरीके से जो है ड्रिफ्ट हो जाते हैं एंड दे फॉल इनटू बैड कंपनी, या वो अपना नुकसान कर लेते हैं, या मे बी दे कीप ऑन सीकिंग फॉर द आउटर वर्ल्ड या आउट ऑफ space, या even online जो है they start seeking for guidance. So that is not the guidance which as an adult, as a parent, you would want your children to see, cause आप ही उस टाइम से गुजरे हैं and you too an adult, और आप जब पेरेंट बनते हैं तो you learn a lot, आपको जिंदगी बहुत एक्सपीरियंस कराती है। तो अपने वो जो एक्सपीरियंसेस हैं वो अपने बच्चों के साथ शेयर करें, और जहां जहां उनको जरूरत है उनकी वो जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं या प्रॉब्लम्स हैं उनको आसान करने की कोशिश करें। नेवर थिंक कि भाई वी कांट टॉक अबाउट दिस थिंग, या आप जो है शर्मा शर्मी में जो है बातें जो है उनके साथ डिस्कस ना करें। लेट देम कम फॉरवर्ड, लेट देम शेयर देयर थॉट, लेट देम शेयर देयर प्रॉब्लम्स, एंड बी देयर टू address those problems. As a parent, this is our responsibility, and this is a very challenging situation for the coming years. अभी भी है, but ये है कि in coming years, अगर if you're not able to develop this bond, this fatherly and motherly bond with your children, तो सूरत हाल ज्यादा खराब हो सकती है। Okay, so Qazi Nadeem, आप कह रहे हैं reading such material which will guide us. Yes, we need to, we need to read all the time. अब वो जो है, यानी आप ये कहें कि भाई मेरा जो है ये प्रोफेशन है तो मैंने सिर्फ इसके मुतालिक पढ़ना है, no. You have to have a diversified knowledge. You have to read about different things. Even as a parent, you need to, read different books. Parenting tips के बारे में आपको पढ़ना है, अपने psychology के बारे में पढ़ना है, आपने अपने बच्चे की जो नीड्स हैं या बच्ची की नीड्स हैं उसको अंडरस्टैंड करने के बारे में पढ़ना है। देयर सो मच, एंड देन देयर आर सो मेनी पीपल जो कि ऑलरेडी जो है इस फील्ड में काम कर चुके हैं। देयर सो मेनी बुक्स जिनको आप पढ़ के यू कैन ग्रैस्प द एसेंस, एंड यू एग्जैक्टली नो कि ओके आपका बच्चा इस स्टेज पे है तो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, आपका बच्चा इस स्टेज पे है दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो यू हैव टू बी अ स्टेप ऑफ देम। जिस तरह जब आप जो है कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में होते हैं या इवन स्कूल में होते हैं, व्हेन यू गो टू द क्लास, तो वहां पर जो टीचर्स होते हैं दे आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड, उन्होंने जो पढ़ाना होता है दे आर प्रिपेयर्ड। ओके, हमारा आज का टॉपिक ये है, एंड दे आर रेडी टू टेक एनी क्वेश्चंस, बिकॉज this is this is the benefit of reading. When you are reading vastly, you are not keeping yourself narrow. So जितने ज्यादा आप रीडिंग करेंगे, जितनी ज्यादा आप इंटरप्रिटेशंस पढ़ेंगे, लोगों के साथ मिले जुलेंगे, आपका जो माइंड है वो भी खुलता जाएगा, आपका जो नॉलेज है वो भी वास्ट होगा। एंड देन you have to apply the knowledge according to your surroundings, according to your religion, according to your code. So you are not going to go against your code of life just on the pretext कि भाई फलाने ने ये बात की हुई है। So you have to keep in mind your own code as well. Okay, if there's any other comment मैं वो भी चेक कर लेती हूँ। And you know what, it's a motivation में ना, you need to inspire other people around you.
क्योंकि whatever you are doing, जो भी एक positive impact आप create कर रही हैं, it has to impact other people in the positive direction. क्योंकि जब आप कोई अच्छा काम कर रहे होंगे, उससे लोग इन्फ्लुएंस होंगे, उससे लोग इंस्पायर होंगे, एंड दे ऑल्सो स्टार्ट चेंजिंग, बल्कि वो क्या चेंज करेंगे, आपकी बातों से जो है ना, दे begin to change and they'll observe that change in their lives, and this is going to start a chain reaction in the good sense. तो आपका जो है हमेशा काम ये होना चाहिए कि you need to do things जो कि लोगों को इंस्पायर करें. जब लोग ये चीज देखते हैं कि okay, this person was so downtrodden and how this person transformed himself or herself, so if this person can do it, so we can do it. So, when you treat yourself on the level of, on the ground level, when you treat yourself at par with everyone, आप अपने आप को किसी जो है हाई दर्जे पे नहीं प्लेस करते, या आप अपने आप को ये नहीं समझते कि ओह मैं तो बहुत बड़ा हो गया हूँ, या मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, या मेरा नॉलेज बहुत ज्यादा हो गया है और इन बाकियों का तो कोई जो है नॉलेज ही नहीं है, या इनके तो कोई एक्सपीरियंसेस नहीं है. यू डोंट डू दैट. You want to inspire people, you treat yourself at their level. क्योंकि नॉलेज देना, नॉलेज, वास्ट नॉलेज होना, या बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होना, दैट इज दैट्स ऑल पार्ट ऑफ द cycle. But how to implement that and how to impart positivity, that is totally up to you. So if you are able to achieve that, so then you have done justice to whatever you have learned over the years. एंड अगर आपकी जो है बातें और आपका जो कंटेंट है, या आप जो कुछ इम्पार्ट कर रहे हैं, इट्स इफेक्टिंग पीपल इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, तो दिस इज ऑल सत्य जारिया एंड इट्स गोइंग टू हेल्प पीपल इन द पॉजिटिव वे. और आपका जो है फिर मिशन स्टैब्लिश हो जाता है एंड मिशन अकम्प्लिश हो जाता है. उस्माना यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ओके, सो मेरा जो लास्ट पॉइंट है दैट इज ये जो सेल्फ मोटिवेशन होती है ना, दैट फॉस्टर्स ग्रोथ एज वेल. और वो जो है इसी तरीके से करती है कि भाई यू कीप ऑन चैलेंजिंग योरसेल्फ. आपके इर्द गिर्द जो भी सिनेरियोज हैं, जो कुछ हो रहा है, आप अपने आप को उसमें से पुल आउट करते हैं, एंड यू डोंट लुक कि भाई लोग आपको पुल आउट करेंगे. यू हैव दिस ड्राइविंग डिजायर, यू हैव दिस ड्राइविंग फोर्स विद इन योरसेल्फ, एंड यू आर रेडी टू पुल yourself out of it, and then in the long run you also take with you other people जो कि उस सिनेरियो में है, and you try to lift them out as well. So ये जो होती है fostering growth होती है, it's a two way approach. उसमें आप सिर्फ जो है अपने आप को ही नहीं पुल अप कर रहे होते, बल्कि आपके इर्द गिर्द भी जो लोग होते हैं जो शायद किसी भी वजह से उस पोजीशन में नहीं होते कि अपने आप को अपलिफ्ट कर सकें, तो आप उनको भी साथ के साथ अपलिफ्ट करते हैं. This is all what I wanted to share today regarding motivation. Now, if you're satisfied with today's topic, do let me know what do you think about today's topic. And अगर जो है किसी को कोई चीज समझ नहीं आई, तो तब भी आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये चीज समझ नहीं आई. I'll explain that again. And in the meantime, अगर आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा है, तो you can always give me stars, which is a Facebook, way of, appreciation. So you can always do that. Or then I think I have covered all the things which I wanted to cover in this session. And now let me see, there's someone at the top of my screen. Qazi Nadeem Ashraf, Allah aapko ajr azeem de. Thank you so much, and thank you so much for sharing your thoughts and contributing your wishful thinking and suggestions as well. Okay, so now I'm just going to see, I can see someone. I'll try to take you live. Let's see who this is. मैं आपका नाम पहले, अदनान मलिक. Yes, I have invited you. See if you can. Okay. Qadir Ehsan, you're saying, can you explain how to move on? Okay, 2 days ago, I did this session on how to let go of the past. So if you, go on Facebook, it's, it's uploaded on Facebook. So you can see it over there. या फिर आप जो है ना 1-2 दिन इंतजार कर लें. Most probably by tomorrow it's going to be uploaded on YouTube. So you can see on my YouTube channel, which is Sabahat Amir Talks, and you can, see the whole session over there. So it's about how you can move on.
ओके सो इट्स स्टिल एडिंग, और आई गेस ऐड नहीं हो रहा, मे बी नेट कोई कनेक्शन का इशू है. इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन, नो वरीज. अगर नहीं ऐड होता तो इट्स ओके. ओके सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग टू दिस सेशन, और इंशाल्लाह नाउ आई विल हैव माय सेशन ऑन मंडे. और मंडे को जो है देन देयर आर सम टॉपिक सजेशन जो कि काजी रजीम अशरफ साहब ने दिए, तो आई विल सी मैं जो हूँ उनमें से इस टॉपिक पे जो है बात कर सकती हूँ. एंड देन आई विल टॉक अबाउट दैट टॉपिक ऑन मंडे इंशाल्लाह. और तब तक के लिए आज सैटरडे है, आज सैटरडे था, आज सैटरडे था ना, यस आज सैटरडे था. तो सैटरडे तो तकरीबन खत्म होने वाला है, सो कल संडे है, एंजॉय कीजिएगा, रेस्ट कीजिएगा, अपनी एनर्जी को बूस्ट अप कीजिएगा, अपने आप को मोटिवेट कीजिएगा कि भाई मंडे आ रहा है, और मंडे को आपने जो है फिर से अपने कामों में जुटना है और काम करना है. जो भी गोल्स हैं उसको पूरे वीक पे स्प्रेड कर लें और उन पे बस काम किए जाएं. एंड स्टे पॉजिटिव, खुद भी पॉजिटिव रहें, अपने इर्द गिर्द वालों को भी पॉजिटिविटी की जो है हदायत करें, और अच्छा अच्छा जो है जिंदगी गुजारने की कोशिश करें. जिंदगी में जो है पेन्स एंड प्लेजर्स दोनों साथ साथ चलते हैं, so you have to adapt yourself according to the circumstances. So this is all what I wanted to share, or inshallah I will meet again with you on Monday. So Allah Hafiz and take care. Bye bye.